There are many tourist places in England, but I am telling you the top 5 famous tourist places that you have to maybe visit. First, London. London is the capital of England. It is famous for its rich culture, history, and modern art. In London, there are top 5 places that we have to visit. That includes Buckingham Palace, Tower Bridge, London Eye, Stonehenge, and the British Museum. Shruti, I am from England. Today I am telling about some fun facts about England. England comes into United Kingdoms, also known as UK. There are 4 countries in the United Kingdoms: London, England, and other two countries are smaller ones. The biggest country in the UK is the London, and the first is the England. We are from the England and also known as the British. The England is most famous for its cricket players because they are top-notch players and plays as good as India. England is also famous for its currency like dollars because it is more expensive than the India's rupees. In the England, the families are so royal and their traditional cultures are so enriched in the past. England's traditional food is sandwich, hot dogs and forks. Thank you. मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम दक्षिण भारत के बारे में बताने वाले हैं। दक्षिण भारत में चावल के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला राज्य के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में मंदिर, समुद्र तट और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारतीय भोजन में समृद्ध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें चावल, नारियल और मसालों का भरपूर उपयोग किया जाता है। We are representing Indian country. Italy is the country which is the western side of the Europe. It is famous for its specialized food and traditional food. Italy, part of Europe, it is known for its traditional cuisine, including pasta and pizza. It is also known for its tradition and its boat shape. It is also known for its manufacturers like Ferrari and Gucci. Namaste, my name is Gauri. Today I am telling you information about Kashmir state. Kashmir's famous food is rajma and chawal, and it is also famous for its spiced tea kama. नमस्ते, म्यूची नाम ऋषिका। आज मैं आपको कश्मीर के बारे में बताने वाली हूँ। कश्मीर का फेमस फूड है राजमा चावल एंड its famous fun fact is a floating boat. It is in Leh and many people visit every year in Kashmir for trips. Thank you. आदाब, म्यूची नाव धनश्री। अस्सलाम वालेकुम। आदाब, मी नाव ललिता। आदाब, मी नाव सुशीला। शुभ प्रभात। आज मी तुम्हाला दक्षिण भारताबद्दल थोडीशी माहिती देणार आहे। दक्षिण भारतात तांदूळ हे पीक जास्त पिकवले जाते। दक्षिण भारतामध्ये कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ अशी इत्यादी राज्ये येतात। ह्या राज्यांमध्ये इत्यादी मंदिरे, पुन्हा पठारे असे वेगवेगळे आहेत। दक्षिण भारत हे पूर्ण समुद्र किनारे आहे। सर्वांनो, माझे नाव वेदांत सचिन शेलार आहे। मी इथल्या या राज्याबद्दल काही माहिती देणार आहे। महाराष्ट्र हा राज्य खूप सुंदर आहे आणि या महाराष्ट्र राज्यात भारताचे लीडर राजा श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्म झाला होता। श्री छत्रपती शिवाजी
महाराज यांचे महाराष्ट्र या राज्यात खूप सारे गड किल्ले आहेत. या राज्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले व लोकमान्य टिळक यासारखे खूप क्रांतिकारी जन्मले होते. थँक्यू. We are from Australia. Australia is a country that is also a continent. There are 6 main states of Australia: Western Australia, South Australia, Northern Territory, Queensland, New South Wales, and Victoria. Thank you. We are tellers Australia's food and traditional food. There are veggies, biscuits and biscuits, burger with beetroot. Australian food culture. Australian food culture is fusion ingredients and modern Australia is famous for their cricket. Today we are telling about Vietnam. So the first fun fact about Vietnam is Vietnam is the world's second largest coffee exporter. The second fun fact is the largest cave is in Vietnam called Son Doong Cave. The third fun fact is in the Vietnam there is a unique coffee called Cafe Tung. In that coffee they also use an egg. The fourth fun fact is Vietnam have banyan tree that is over 1,000 years old. Thank you. देखा हंसते हुए गालों में बेसर ख्यालों में हुस्न के Good morning everyone. Today I will tell about Vietnam and its beautiful culture. Vietnam people talk in Vietnamese language. Their food is so tasty, like pho and spring rolls are famous. Vietnamese people respect family, traditions, festival like Tết. They help New Year. The Vietnam is a colorful country with kind of people and rich history. Thank you. On side of the Thailand, the Vietnam's traditional food is pho and spaghetti. Thank you. सुनी और तारा चमकीला होगा चांद शर्मीला होगा नत में लगा लेना रातों रात तारा को लगा लेना जरा सी सांवरी है वो जरा सी बावरी है वो सुर में नमस्कार, माझे नाव गौरव महेंद्र कदम. महाराष्ट्राबद्दल सांगणार आहे. महाराष्ट्रामधील खास पदार्थ भाकरवाडी आहे. मी तुम्हाला आपल्या मराठा साम्राज्याच्या पोशाख परंपरा खाद्यपदार्थ आणि किल्ल्यांबद्दल काही माहिती देणार आहे. मराठा साम्राज्य हे शौर्याचे प्रतीक आहे. मराठा साम्राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हे स्थापन केलेले साम्राज्य भारतीय खंडात एक प्रमुख शक्ती बनले. फिर भी है अड़ेया लख समझाया दिल फिर भी है I am representing here the country America. America is found by Christopher Columbus. It is a large and modern country. Thank you. The America country's olden peoples known as a cowboy. The America has two names. First name is United States and second name is USA. The America is the richest country compared to the everyone. My name is Shlok Vijay Bariskar. I am representing the America country which is also known as USA. The capital of USA is Washington DC and its population is 330 million. The national animal of the America is American Basin and
bent eagle. Thank you. रास्ता बेगरज तेरा हो या गायकवाड़। मैं आपको उड़ीसा के बारे में कुछ शब्द बताने वाला हूँ। उड़ीसा के राजा गजपति थे। उड़ीसा में एक जगन्नाथ मंदिर भी है। गांधी जी उनकी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए उड़ीसा गए थे। यह पोशाक गांधी जी की वजह से ही उड़ीसा के लोग पहनते हैं। थैंक यू। यूं से क्या रही है जिंदगी ओहो नाव वैष्णवी दीपक बर्डे आहे. आज आम्ही महाराष्ट्रीयन बुक केला आहे. महाराष्ट्र हे भारताच्या पश्चिम भागात बसलेले एक सुंदर आणि प्रगत राज्य आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे. महाराष्ट्राची स्थापना 1 मे 1907 रोजी झाली. आम्हालाच नाही तर सर्वांना अभिमान आहे महाराष्ट्रात जन्मण्याचा. धन्यवाद. धन्यवाद. इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा Everyone, my name is Arohi Swadipkite. Today I tell you about South India. Why South India called South India? Because it is a south part of the India. That's why it's called the South India. Some city in the South India is Bengal, Mysore, and South India famous food is dosa, idli, sambar, chutney and lemon. In South India, village is down on Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Thank you. मेरा नाम श्रीजा हनुमत खेड़कर है। मैं आज गुजरात के बारे में बताने वाली हूँ। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें स्वीट्स में जलेबी खाई जाती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। थैंक यू। उन्हें खोले नाम से बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले મને ભૂલો બડી વાર પ્રેમની આ मौसम से अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम से